और अब मैं मंच प्रोफेसर प्रमोद कुमार को सौंपती हूँ। Namaskar. I think we all know the importance of today's topic that we are going to discuss. I request all the students to be seated immediately without wasting even a single minute. All students. We all know that the topic that we are going to discuss today is disaster reporting. You might have some classes on this topic in your respective courses, but today we have two experts from the National Disaster Management Authority to sensitize you and also to address your queries on disaster reporting. डिजास्टर रिपोर्टिंग के बारे में हम सब ने पढ़ा है, सुना है, देखा है, हम सबको एहसास है और हम सब जानते हैं कि सिर्फ टनल में अगर कुछ हमारे मजदूर फंस गए वही डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर बहुत बड़ा है। अर्थक्वेक भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, साइक्लोन भी हो सकते हैं, सुनामी भी हो सकती है, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर हो सकते हैं, केमिकल डिजास्टर, टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग, हॉस्टेज सिचुएशन, ऑल दीज आर डिजास्टर्स, मैन-मेड और नेचुरल डिजास्टर्स. So today, without wasting the time, sir, around 500 students from all campuses of IMC have joined this discussion, and they have prepared their questions. We have 6 campuses total, students from Kottayam campus, Amravati campus, Aizawl campus, Jammu campus, and our Dhenkanal, Odisha campus. They have also joined. We have total 9 courses: English journalism, Hindi journalism, Urdu journalism, radio and TV journalism, advertising and PR. We have digital media course, we have Malayalam journalism, Marathi journalism, and Odia journalism. We have so many courses, and students from all courses have joined this discussion. I would like to request Professor Govind Singh sir to please felicitate our today's guest. I first request to felicitate General Ata Hasnain sir. General Ata Hasnain sir is a member of National Disaster Management Authority, and he is also Chancellor of Central University Kashmir. And इनके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं, सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. Our second guest is Commandant Aditya Kumar sir. He is Senior Consultant in NDMA. आपका बहुत लंबा कैरियर है, 30 इयर्स से आप हैं. नवल एकेडमी गोवा के आप एलुमनस हैं. और सर के बारे में खास बात यह है कि आप माउंटेन डिजास्टर के एक्सपर्ट हैं. एक गेस्ट हमारे साथ और आज जुड़ने वाले थे लेकिन वो नहीं जुड़ पाए हैं, बाद में कभी हम उन्हें जरूर आपके साथ जोड़ेंगे. मिस्टर केपी सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले थे, कर्नल केपी सिंह सर. वो आज लेकिन कोस्टल एरियाज में जो डिजास्टर होता है उसके वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन चेन्नई तमिलनाडु में फ्लड्स के कारण उन्हें चेन्नई जाना पड़ा है. वो मुझे लगता है आज वाले कार्यक्रम से भी जरूरी है. इसलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कमांडेंट आदित्य कुमार सर टू स्टार्ट हिज प्रेजेंटेशन. Good afternoon to you all.
and I love backbenchers. They are the most creative people in the classrooms, universities. So may I request some of the backbenchers to please come in front so that I have one-to-one interaction with a lot of creative people. Yeah, this side also. Madam, please come in front. A lot of seats are vacant here. Yes. Empty benches, empty chairs are a big discouragement to most of the speakers. Unless and until something is a very genius, who knows, he will not be understood. So, okay. I am first of all, very good afternoon to the faculty members, to the senior officers, experts who have joined this session. We are grateful for this great opportunity, interacting with young minds. I have been in this field for now more than 30 years. I'm a coastal expert. So today, an emergency specialist is talking to, the future emergency journalists. So let the conversation, discussion, and the communication between me and you based on this future relationship. I have slightly, in your advertisement, it is written Abda reporting, so I have amplified it. I've given it a bit larger name, media reporting, disaster management, and emergency response. So the entire presentation is divided into two parts. First, I will give you basic fundamentals of what is disaster management, what is emergency response, and then you will come to know then what is expected from a journalist. When you go to the field, when you give a coverage to various kinds of disasters, what is expected out of you? How you become a part of the system, how you aid the system. So, a lot of it's as promised. I am given 25 minutes. So, Professor Pramodji, my 25 minutes starts now. Okay. So, and please give me alert 3 minutes before, if you don't mind. And we will take questions in the QA session in the end. So the agenda of the presentation is this. A brief 2 parts you can see. I will elaborate on these issues in length. Actually, for us, it was a very difficult topic. I know what I have to do, but now I have to tell you what you have to do in my domain. So I just start with a very simple definition of a disaster or emergency. In our parlance, we don't call it disaster or emergency, we call it an incident. Around the world, from 2006 onward, when the US contingency department, they invented the ICS system, the incident command system, the world over this system was replicated in different countries in different manner. In 2010 also, we incorporated this system in the form of IRS, Incident Response System. So many countries adopted it in the form of Incident Management System.
So, but it is more or less, it is the same standard format, which is now applicable in most of the situations. So during the course of my presentation, sometimes I will use the terminology incident. Incident means a disaster event or an emergency scenario. So what is a disaster event? That poses threat or potential threat to life, property, and environment, and causes disruption of community lifelines, and has capacity to overwhelm the entire emergency response system. As a journalist, from this lecture, you should take 3-4 things, very important things. When you report emergency disaster, what are community lifelines? What is emergency support functions? If you focus on these technical aspects, you will come out with a very systematic reporting during the actual disasters. So there may be without warning, a cyclone is has an ample warning, but an earthquake doesn't have a warning, or a fire doesn't have a warning. It may be because of a natural, man-made, or technological accident, or industrial accident. Every disaster requires delivery of emergency support functions to the site, to the affected people, to the environment, to the place, and which requires the core capabilities of department. See, we have got large number of departments. Our government is very big. Like other countries also, you have got 50, 60 departments. They all have got, a different specific job to do. During an emergency or a response or a disaster management event, all these organizations have to come together and produce a very coordinated, outcome. So, which is not simple, because these organizations are working in day-to-day life in their own domains. So during disaster, what we call the lack of human-related cohesion, capability, or capacity to manage the command control coordination of limited resources create a more devastating secondary man-made disaster. So a cyclone will always have a secondary man-made disaster. Few power stations will be flooded. Few communication towers will be down. So it will have a cascading effect. Your ATMs will be down. Your financial system will be down. Your food supplies will be down. So every cyclone will have a direct impact and a secondary impact. So what are the emergency support functions? I have listed few of them. There are around 20 of them, 20 odd emergency support functions, which every single department has to do. So when you are doing a reporting from the ground, you should focus on, okay, mass care, emergency assistance and sheltering. Which department responsibility is this? So you bring out in your report that yes, this department people are not here. So we are lacking in this domain. But it doesn't mean that rest of the 50 departments who are doing their job, they are lacking something. And what is basic disaster management framework? We also call it incident management. It is broad spectrum of activities and organization providing operators, coordination, support applied to all levels of the government and community. Throughout my presentation, we will focus on two things, the whole government and the whole community approach. Using diverse resources to plan for, to respond to, and to recover from an incident, regardless of its cost, size, or complexity. An incident can be very small, and it can be a very large incident. So I've told you IRS, in our country, we use the IRS system. IRS came out from the NDMA IRS guidelines 2010. IRS is based on common terminology. You know, we have 29 states and UTs. Every state and UT have got a different way of functioning. So IRS gives a common terminology. Everybody will call incident an incident. Everybody will call IRS facility a relief camp is relief camp in Tamil Nadu also, and in Himachal also, or in Jammu Kashmir also. So we have given a common terminology, a unified command, a modular organization, integrated communications with the central agencies, with the NGOs, with the state departments, with general public,
and comprehensive resource management and a lot of other things. So what are the IRS priorities? Saving life first, incident stabilization second, and property and environment is the third thing. So IRS facilities, as a journalist, you should know what is a triage center, what is a relief camp, what is a staging area, what is the incident command post. If you have to go and take a report what is happening, then you will go to incident command post and ask incident commander, sir, what is happening in your area? How far we have progressed? And the last, in each district, the district collector is the responsible officer. In each state, the chief secretary is the responsible officer. This is as per the NDMA Act 2005. So they are the top echelons, they are the top responsible officer, which whatever happens in a district, the district collector is answerable. And under him is the incident commander, which are the deputy collectors or the revenue heads of that jurisdiction. What are the challenges? You see, we are a very diverse country, unlike other small countries. We have problems in the hills, we have problems in the mountains, we have cyclones at sea, we have rising sea levels in the islands, we have gulfs, we have got shipping hubs, we have got all kinds of terrain. And every terrain is different. And everywhere the disaster, same kind of disaster has a different effect. Our Maharashtra coastline is entirely different from Gujarat coastline. So this cyclone, which will have an impact on the Maharashtra coastal area, will have a different impact on the Gujarat coastal area, and it will have different impact in the islands. So as a journalist, you should know the difference when you are going to cover a disaster. So if you see the kind of disaster we face each year everywhere, it is cyclones, earthquake, floods, landslides, glacial lake outbursts, industrial accidents, CBRN, major fires, heat waves, tsunamis. We have whatnot, everything which happens in remaining part of the globe happens here in our country. So disaster management for us is a very, very big challenge. So what we do, what are the focus areas in the disaster management? Maintaining community lifelines. There are around 20 community lifelines. How we maintain that community lifelines when a disaster happens. Using core capabilities of the department. And then delivery of the emergency support functions. So if the journalists, they keep focus on these three things, their report will be, a concise, precise report which is required for both the government and the community. And the whole community, whole government concept, the whole community is about, when we see the community as a disaster specialist, emergency response specialist, we see community in two ways. One, that the community is the first responder. They are the victims and the first response will come from themselves. And second, when we do the response, then every section of the community should be addressed, whether it is widows, children, old age, sick people, or people or poor or rich, or immigrants, or laborers, or industry people. Everybody, every section of the community should receive aid, should receive search and rescue, should receive the assistance from the government. And the government machinery takes time. Disaster management, as I told you, different departments are busy in their own work. So when a disaster happens, they all coordinate. It takes time. We are a very big nation. So uncertainty is part of the emergency response process. So there comes the role of media. From now on, I will speak only the role of media, the role of the young journalist, how you can help us bridge the uncertainty. If something we see, if you see in last 50 years, our villages have become, towns. Towns have become cities. Cities have become, mega cities. And mega cities have become, small countries. So we have got so much of density of both the people and the critical infrastructure. We have got pipelines everywhere. We have got gas pipelines, roads, bridges, hundreds and hundreds of thousands of bridges, rivers, canals. The entire critical infrastructure, across the country we have got around 1,000, oil depots. So they all will be impacted.
when the cyclone comes, earthquake comes. So to get minute information, which area is impacted badly, where are the people stuck, the government agencies will find it very difficult to gather the whole surface picture. So where now comes the role of the media, your people's journalist, who gives you information every now and then. They tell us. From them, from your inputs also, we create the complete surface picture. We fill up gaps. So during an incident, the time-sensitive decisions are made on not so reliable, inadequate, and rudimentary information in a chaotic and ambiguous situation. This is the first golden hour you face these kinds of challenges. But that is a time that the media should not raise points that, yes, why the response agency has not reached. So they should understand that the first few hours are very, very important, and how chaotic the first few hours are. Communication and information management. Communication with public is vital. That's why we are here today speaking with you, because you are interface between us and the public. So absolute requirement to maintain public trust and transmit new information as the emergency situation unfolds, with the goal of reducing risk to public. This is the one line where we expect the entire media fraternity to work with us. In the event that require public to take protective actions, timely provision of accessible information from trusted sources is essential for ensuring public cooperation. And small incidents can have large extended consequences. Similarly, large incidents can have massive and extended consequences. So media is expected to build credibility on trust and establish communication with public, especially during disasters. So I hope some of the people who are sleeping there, please rise up. I can see white t-shirt, fourth, fifth row. So effective communication is part of front-end decision-making in any emergency response plan. Today it may be a short lecture for you, but tomorrow when you go to the field, you become a senior journalist, you will long for these information. That yes, somebody again come and refresh us how we go about it. So right message at the right time from the right person can save lives. And media reporting during disasters. Media continue to serve as an important emergency information system during an incident. So media can provide immediate and continuous updates on a crisis through contributions from public, people experiencing a crisis. See, if you see most of our control rooms, you will find 8 or 10 at least, a video screen running only live TV channels. So we are always looking from media that our information gap is fulfilled by your information. So we don't have a gaps. So media can help activate local emergency responses. This has happened many times. When media reports something, if as a journalist you see a white cloud at low height, you will immediately report, what is this unusual? So a specialist can say it can be gas leak, it can be a chemical. So your reporting will initiate that emergency action. So public trust in decision making, this is what we are looking. Media can establish or erode public trust. Your bad reporting can erode public trust in whatever decision making during a disaster. So typically media serve two broad functions. They monitor and inform public of risk. It helps limit exposures, and they serve as a watchdog for public agencies and government. So disasters are nowadays major media event. You will find a lot of text on the slides. I will keep the presentation here if this can be used in any of your course capsule or something. Retaining confidence is a key aim of emergency response plan. If you see the colored
line, the media is a tool which can bring positive outcomes by facilitating and accelerating the speed and breadth of communication during disasters. Also, speed and impact of media can initially overwhelm the authorities. So nowadays there is a mad race. Who reaches first? Which channel reaches first? So every channel you will see will try to reach any spot, any remote spot. If you see the Ludhiana gas incident, the people were, going past the dead bodies lying on the streets. Rather than helping the people who are lying on the street, they were just showing. So that mad race, let's utilize this energy in the media for the emergency response. Now your cautions in reporting. Dissemination of information without regard for complexities and uncertainties of risk is not effective communication. It is not that what you say from the ground is a communication. No. Without understanding how complex this event is. And this you will understand only when you have educated yourself about the disaster management. When you know what is a chemical incident or what is a CBRN biological incident or what is a cyclone. So issues of health and safety can arouse strong emotions, including anger and hostility. So hard-earned public trust of the government agencies can be eroded by media. It can be reinforced by media also. It can be eroded by your irresponsible reporting. So media has the ability to prevent a crisis from going out of control, and the reporter should not ignore his ability to aggravate an unfolding emergency situation. So once as a disaster, now the media reporting has become a very specialized subject. Now you have got specialization, super specialization. In defense sector, the people who are reporting on army, they are not report on the air force. They don't report on navy because they have developed super specialization kind of thing. So the same thing happens in this disaster management reporting also. So for those who wish to pursue the reporting in the disaster management domain, I have just listed few points that go systematically on these things. Gather information systematically on this and then build up your report. So this would also bring non-performing entities, gray areas, gaps in execution of emergency response plan to focus and may trigger a quick corrective action. So your motto is communicate early and often. So everywhere we have one, whether it is the government agencies or even the media newsroom, what actually you try to do? You try to create a surface picture. You try to create a complete situational awareness picture. You build situational awareness picture from different thousands of inputs which you get in the control room, in the newsroom. So I have given you two tier 1 reporting and tier 2 reporting. So tier 1 reporting, you can see basic disaster summary, and tier 2 reporting, the lifeline reporting, which I have named it a lifeline reporting. So the last line, if you see, these should be the keywords for you. What, so what, now what, what's the gap, and when this gap will be fulfilled. This should be the disaster reporting. Then predictive and prescriptive analytics. Don't predict the things unscientifically. When you don't try to make simple models out of your imagination, out of your half-baked knowledge and very few inputs. If you go systematically, domain by domain in any disaster, which the format I have given you, then you will be able to arrive at the correct analysis. So basic operational knowledge and understanding of operations during a reporting incident is must. So if you do not know how many agencies are working, which agency is doing what, and you show dead bodies and injured people, it is injustice. Then, difficult and complex emergency scenario, it's a
part of good reporting during the disaster that you're obtaining and analyzing estimates for completion of reforms, experts, scaling immediate objectives, desired end states. You should understand what is the desired end state of the the agencies. And the last line, what nation thinks about, prepares for, and responds to a disaster. This should always be there in your mind. So when you do a predictive and prescriptive analysis, follow the last line. What is the current state? What is the lifeline reestablishment status? What is incident stabilization? I have not given you incident stabilization. There is it's a big domain altogether. But as of today's lecture, you should know, have one thing in your mind, that there's something called incident stabilization. And then what is the recovery? So this may be one of the last slide now. Prepare yourself, prime the pump. Prepare yourself for the disaster. If you are working in a jurisdiction, you are working in a district, in a state, you should know this state will face what kind of disasters. So engage with local community in your jurisdiction. Gather critical information from ground in a transparent and accountable manner. We don't want media persons to go secretively and get information from not transparent or accountable manner. This is not warranted in the disaster management Aapda reporting. So understand how time-sensitive decisions are made. If you understand this line, all these senior journalists, if you see, those who have been reporting for last 20, 30 years, they have been reporting for Kargil Times, they understand this. And when they talk to the government officials, there is no hurry in there. They are very calm, cool, because they understand that it is a very ambiguous situation. These are very uncertain times. So the officer who is speaking to them, the government spokesperson who is there in front of them, he has got a huge amount of uncertainty in his mind, in his facts, in his figures, in his domain awareness. So when they speak, they don't try to, the senior journalists don't try to bring out those uncertainties and, the lack of facts. A junior journalist will always try to bring out that. So there is a difference between the two. So due to short response timelines during most disaster, preparedness begins and ends at the community level, and media in that manner is part of the community. You should always understand that you are part of the community. And media helps understand community DNA, recognize community capabilities, and broaden the team. So, ER specialists and ER reporters, we both have a job to do and deadlines to meet. Remember this. So this is the last slide. Media gives us the last mile connectivity. And now from the tunnel experience, which Honorable Member NDMA will speak, we know the last mile means the rat miners. So you are the omnipresent, free-flowing, most visible entity. The fourth stage, and we refer you now as the fourth dimension of the emergency response system. So with this, be right, be first, be right, and be credible. Thank you very much. सर, आपको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी. एग्जैक्ट 25 मिनट्स में आपने अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दी है. ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 months, I think every citizen in India must have received a message on his mobile phone. याद है आपको? कितने स्टूडेंट्स को मैसेज मिला? जरा हाथ उठाइए. ठीक से शर्माते हुए मत उठाइए, जोर से, नहीं तो लगेगा मैसेज नहीं आया. मैसेज कहां से आया था बताने की जरूरत है. इट शोज द प्रिपेयर्डनेस on the part of National Disaster Management Authority. कुछ डिजास्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें टाला जा सकता है, कुछ को नहीं टाला जा सकता. डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं,
लेकिन उसके लिए जो एडवांस प्लानिंग चाहिए वो एनडीएमए के लेवल पर बहुत तेजी से हो रही है. ड्यूरिंग द लास्ट 4-5 years, the trust in national disaster management authorities or agencies has definitely strengthened. सर ने अपनी बातचीत में बहुत सारे पॉइंट कहे. एक आपने कहा कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनरिलायबल सोर्सेस कैन एड टू द डैमेज डिजास्टर. सर ने कहा है, 2-3 बातें सर ने कही बड़ी इंटरेस्टिंग हैं. राइट मैसेज फ्रॉम द राइट पर्सन कैन सेव द लाइव्स. ये बहुत जरूरी है रिपोर्टिंग में. इंफॉर्मेशन गैप इज फिल्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग बाय मीडिया. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. मुझे लगता है कि आप सबको इसमें बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए. सर, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन सर की प्रेजेंटेशन के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे. जो हमारे रीजनल सेंटर्स जुड़े हैं उनके क्वेश्चंस भी हम लेंगे. सो कीप योर क्वेश्चंस रेडी. नाउ आई रिक्वेस्ट जनरल अता हसनैन सर to please share his thoughts and enlighten our students. Sir. Good afternoon. Good afternoon. Can you hear me at the back? Good afternoon. Namaskar. Jai Hind. All the possible salutations that we give in India. I don't know how many times I have come to the IIMC. It's always a pleasure to be invited back here. Very vibrant community of people, young people, and it's always nice to be interacting with you. पता नहीं आप में से कितने लोग थे जो who have attended my talks here earlier. I'm going to repeat 1 or 2 examples to reinforce what I have been always saying. बहुत से पहले सिल्कियारा टनल रेस्क्यू की जो ब्रीफिंग्स थी, मीडिया ब्रीफिंग्स थी, कितने लोगों ने देखी टेलीविजन पे? हाथ खड़ा करिए. Few of you did see it. अगर आप, if you are an inquisitive student of mass communication, तो आपको मालूम होना चाहिए था कि 4 बजे रोज उन 10 दिनों में रोज एक मीटिंग हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें सब मीडिया, नेशनल मीडिया आ रही थी, उनकी ब्रीफिंग हो रही थी. You should have actually listened to those briefings. It would have been a great learning for you to understand. मगर उसमें से ये बताइए मुझे, कोई एक बात बता सकता है कि what was one thing which was good and one thing which was bad in the media management? Management बड़ा गलत टर्म है मीडिया का, मगर we still use it. In that episodal time of the conduct of those briefings, एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज बताइए मुझे. Anyone? पहले अच्छी चीज तो बता ही दीजिए. नो, यू हैव नो ओपिनियन. या बताइए. शुक्रिया, बहुत बहुत. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. और मैं अपना प्रेजेंटेशन बना के नहीं लाया हूं. मैं आपको कहानी के तौर पे, एपिसोडल वे, anecdotal way, I'll try and explain you certain circumstances, जिससे आपको खुद समझ में आएगा. I'm an old commander from Kashmir also, as you're aware. और लड़ाई और आपदा जो है, इसके बीच में कोई फासला नहीं होता है. लड़ाई और आपदा तकरीबन एक चीज है. Almost the same. I used almost the same terminologies that I use in disaster management as I used in warfare or in conduct of major anti-terrorist operations. उनमें एक होता था हर दफे all of government approach, जो अभी कमांडर आदित्य साहब ने भी उसको इस्तेमाल किया. The all of government approach. लड़ाई में आपके all of government approach होती है और डिजास्टर में हर वक्त all of government approach होती है. Without that, you cannot go anywhere. It's so important that everyone plays a role in this. और मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है. मगर मैं शुरुआत करता हूं 1-2 एनेक्डोटल रेफरेंसेस के साथ. आपको याद होगा, शायद यू वर टू यंग, 1987 में द इंडियन आर्मी वेंट टू श्रीलंका
and there we fought the campaign in Jaffna. हमारी तकरीबन 500-550 फेटल कैजुअलिटीज हुई थी उस कैंपेन में, जस्ट टू एंटर इनटू जाफना. अभी आप देख रहे हैं हाउ द इजरायलीज हैव एंटर्ड इनटू गाजा, ऑलमोस्ट सिमिलर बिल्ट अप एरियाज के अंदर ये लड़ाई 5 दिशा से हुई थी अंदर. और इंडिया टुडे, वेरी पॉपुलर फेमस मैगजीन, उन्होंने इसको कवर किया था, लाइव कवरेज की थी वहां से. देयर वाज नो टेलीविजन कवरेज नहीं थी उन दिनों में, दूरदर्शन की कुछ 1-2 बाइट्स आ जाती थी, बट प्रिंट मीडिया ने कवर किया था. और प्रिंट मीडिया ने बैटल ऑफ कोपाई, नॉर्थ जाफना के पास 18 कुमाऊं एक बटालियन हमारी, उसके बैटल को कवर किया और उसको अपने कवर स्टोरी पर लगाया. और कवर स्टोरी पर तस्वीर लगाई ऑफ 3 डेड इंडियन सोल्जर्स. आप चुपचाप हो गए. गुड थिंग. आई एम ग्लैड दैट यू आर क्वाइट एंड हियरिंग दिस, बिकॉज याद रखिए, अपनी पूरी जिंदगी में याद रखिए, आगे की पूरे करियर में याद रखिए, भारत का मरा हुआ जवान कभी भारत के किसी मैगजीन के कवर पर नहीं आता. इट इज द मोस्ट इनसेंसिटिव थिंग टू एवर डू. You don't put dead bodies of your soldiers on the cover story of a magazine. You put the dead bodies of other soldiers of the other country or the enemy on the cover. ये मीडिया की टोटल इनसेंसिटिविटी थी. आई पॉइंटेड इट आउट टू इंडिया टुडे. मैंने चिट्ठी लिखी इंडिया टुडे के एडिटर को कि आपको मालूम नहीं कि इन जवानों के फैमिलीज पर क्या असर होगा. इन्होंने आपके देश के लिए जान दी है, पहचानिए इनको. उछालिए तो इनका नाम उछालिए, उछालिए मत इनके शवों को कवर के ऊपर लगाकर. आई एम ग्लैड दैट आई हैव मेड एन इंपैक्ट ऑन योर माइंड्स, बिकॉज ये आपको कोई नहीं बताएगा. और कश्मीर में जब मुझसे सवाल लोग पूछते थे कि सर 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये ऑपरेशन चला जा रहा है आपका, 4 टेररिस्ट फंसे हैं, 3 टेररिस्ट फंसे हैं, फौज अपना ऑपरेशन क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रही है? तो मैं उनके मुंह पर हंसता था, उनसे कहता था आप जाएंगे मेरे साथ ऑपरेशन करने के लिए? जब 2 गोलियां वहां से चलेंगी आपको मालूम नहीं होगा किस दिशा में भागे. सवाल मत पूछिए फौज से कि कितने दिन लगाएगी. मुझसे पूछिए, मैं कहूंगा मैं 20 दिन और दूंगा, 30 और दिन और दूंगा. मुझे डेड टेररिस्ट चाहिए, मरे हुए शव चाहिए टेररिस्ट के यहां. मुझे अपने जवानों के शव नहीं चाहिए वापस. दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ मीडिया सेंसिटिविटी विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. और ये अगर आपको शुरुआत में अपने करियर में ये समझ जाए आप, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक, आई कैन टेल यू. और बिल्कुल जैसे आपका ऑब्जर्वेशन था, बिल्कुल सही, कि आपदा इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वॉर. 41 लोग आपके फ्रंटलाइन वर्कर, जिनको मैं हर मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहता था कि ये हमारे सिपाही हैं, ये 41 आदमी हमारे सिपाही हैं, ये मेरे सिपाही हैं वहां पर जो अंदर फंसे हैं, इनको मैं आदर देता हूं. डोंट कीप पुटिंग प्रेशर ऑन मी टू आस्क मी कि कब निकलेंगे. भारत सरकार का हर साधन इसमें जुड़ा हुआ है. ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लगी हुई है इसके अंदर. ये लड़ाई से कम नहीं है ये. और इसलिए जब आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं और पब्लिक में, इन अ मीडिया, नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस, तो पूरी दुनिया इसको देखती है, पूरा देश इसको देखता है. और उसके वजह से प्रेशर किस पर पड़ता है? उन पर जो इनको राहत पहुंचा रहे हैं, जो इनका आपदा का प्रबंधन कर रहे हैं. वो उनकी जल्दबाजी से ये ना हो कि वो जान खो बैठे, और ये ना हो कि अंदर आपदा और बढ़ जाए. सो डोंट पुट प्रेशर. This is a lesson you must learn for life always. In emergent situations of this kind,
never ever put pressure on those people who are putting their own lives at risk for saving lives of people who are stuck in a situation such as this. ये याद रखिए. I thought I must start my very brief intervention with this particular aspect. आपदा होता क्या है? याद रखिए, एक बस गिर गई और उसमें 2 कैजुअलिटीज हो गई, मे नॉट बी काउंटेड एज एन आपदा. हमारे लिए आपदा तब भी होती है. वो आपदा नॉर्मली वो होती है जिसके अंदर लोकल रिसोर्सेज जो हैं वो काफी नहीं होते हैं राहत पहुंचाने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए. वो आपको रिसोर्सेज इससे बाहर से चाहिए इसके लाने के लिए. दैट मीन्स यू हैव टू गेट एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाकर और तब काम करना पड़ता है. और इसमें जैसे हम लड़ाई में करते हैं, खबर, इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट इंफॉर्मेशन. तो when a reporter, when a journalist is in the field, और उसके पास खबर नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इफ ही इज नॉट एजुकेटेड इनफ अबाउट द एनवायरनमेंट, तो वो सही तरीके के सवाल नहीं पूछ सकता, सही तरीके के कंक्लूजन और डिडक्शन नहीं बना सकता, और इसलिए जो उसकी न्यूज स्टोरी होगी वो कभी फैक्चुअली करेक्ट नहीं होगी, कंजेक्चर पे बेस्ड होगी, रूमर पे बेस्ड होगी. और न्यूज स्टोरीज are never based on rumor. News stories are always based on research, genuine information, on truth. इसके ऊपर होता है. ना कि that you want to score brownie points by saying, by trying to reveal something and coming out at the end to say that this is not true. उससे आपकी अपनी credibility वो questionable हो जाती है. So credibility is one of the very important terminologies in media reporting, and particularly in incidents of war and disaster. ये आप याद रख लीजिएगा. One or two other things before I just come to give you a small case study of the Silkyara tunnel rescue itself. You see, जब तक आपकी knowledge is such an important aspect in reporting. अगर आप general reporter हैं, तो it's all right. But as you grow in your career, you will start becoming a focused reporter. आप social events पे करेंगे, कभी agitation पे करेंगे, कभी parliament पे करेंगे, कभी आपदा पे करेंगे. All kinds of things you will be reporting on. If you don't have basic specialist knowledge, तो आप कैसे करेंगे? दूसरी चीज, to be successful, you must not wait for a disaster to happen to start investigating and reporting. याद रखिए, disaster management में response is the last thing. Response तो बहुत देर में आता है. सबसे अहमियत की चीज होती है preparedness, तैयारी. कि आपने कितनी तैयारी की है, एनडीएमए ने कितनी तैयारी की है, एसडीएमए ने कितनी तैयारी की है. जो अभी सवाल आपसे अभी पूछा अबाउट एयरटेल के जो मैसेजेस जा रहे थे, किसी ने इसको उल्टा पूछा किसी ने कि ये मैसेज क्यों जा रहे हैं, ये हर तरफ एयरटेल के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, एनडीएमए से क्यों मैसेजेस आ रहे हैं. Someone should have asked, someone should have reported कि ये एक ट्रायल चल रहा है, देश भर में एक ट्रायल चल रहा है. इसको कहते हैं कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, विच इज सिंपल. टेक्नोलॉजी के मीन्स में तरीके से एक वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग. आपदा अब तक हम लोग वी यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू ए डिजास्टर. डिजास्टर आया, इंतजार कर रहे हैं, डिजास्टर आ गया, जब डिजास्टर हो गया तो हमने रिस्पॉन्ड किया. रिस्पॉन्स में क्या हुआ, थोड़ी राहत पहुंचा दी, थोड़े राशन दे दिए, थोड़े दिनों के लिए लोगों को स्कूलों में लाकर और वहां पर अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर दिया. गवर्नमेंट ने थोड़े कुक हाउस बना दिए. दिस वाज व्हाट वाज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया सम इयर्स अगो. एंड ऑल्सो पिकिंग अप ऑफ बॉडीज. साइक्लोन के बाद बॉडीज आई, फ्लड के बाद हुआ, उसको उठाया, आपने क्रिमेट किया, बरी किया,
और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो गया। आज प्रोफेशनलाइज हो चुका है। ये मैसेजेस जो जा रहे हैं ये सिंपली आर अर्ली वार्निंग। अब हमारी कोशिश है एनडीएमए की कि किसी भी आपदा से पहले हम आपको वार्निंग दें कि आपदा होने वाली है। यहां तक कि भूकंप की भी हम गूगल के साथ कर रहे हैं काम कि भूकंप की भी कम से कम और कुछ नहीं तो 45 सेकंड के तो आपको मिल जाए वार्निंग, ताकि लोग जो बेसिक चीजें होती हैं भूकंप की वो कर सके, जाने बचेंगी उससे। और हम आपको 5 से 6 दिन की वार्निंग दे सकते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन कहां पर आएगा, किस जगह पर लैंडफॉल होगा, कितनी इंटेंसिटी के साथ आएगा, कितना समुद्र उठेगा, यहां पर सर्ज कितना होगा, ये सब हम आपको दे सकते हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए बिपरजॉय, अभी गुजरात में जो साइक्लोन आया था, 32 मिलियन मैसेजेस भेजे हमने इस कैप्स के जरिए, 32 मिलियन, और एक फेटिलिटी नहीं हुई, नॉट वन फेटिलिटी। इतनी हद तक तैयारी थी, मगर मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं किया इसको। कोई मीडिया हैड नो नॉलेज, इसके बारे में जानकारी। गलती मीडिया की भी नहीं है, गलती एनडीएमए की भी है बहुत, कि एनडीएमए को भी ये दो तरफ से होता है। ये एनडीएमए को भी बुलाना चाहिए था मीडिया को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए, और उनको ब्रीफ करना चाहिए था कि देखिए अभी हमने टेस्ट किया है, ये 32 मिलियन मैसेज भेजे हैं हमने, अगले दफे जब इस तरह का साइक्लोन आएगा ये दूसरी जगहों पर भी टेस्ट होगा। एंड दैट इज हाउ नॉलेज विल प्रोलिफरेट। तो नॉलेज के बिना यू कांट गो एनीवेयर। एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सनैलिटी, wherever you are, you have to be investigative, you have to be inquisitive, और आपको नॉलेज बढ़ाने का हर वक्त एक चाव होना चाहिए, क्वेस्ट होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। मीडिया का पावर देखिए, आप अपना पावर देखिए, आपके हाथ में क्या है। यू गॉट एन अमेजिंग पावर इन योर हैंड, यू कैन चेंज परसेप्शंस। मैं आपको बताता हूं सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू के बारे में इन 2, 3 or 4 minutes ऑन द मीडिया पार्ट ऑफ इट। जब हुआ ये 12 नवंबर को शाम को दिवाली के दिन, नेशन वाज टोल्ड कि एक टनल का कोलैप्स हुआ है, थोड़ा कुछ लोग फंसे हैं। पहले दिन यही खबर थी, दूसरे दिन क्वांटिफिकेशन स्टार्टेड, 41 हो गया नंबर, जुड़ी हुई है सरकार के एजेंसीज जुड़ी हुई हैं इसके अंदर, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब परसेप्शन स्टार्टेड बिल्डिंग, बाहर सरकार ज्यादा नहीं कर रही है इसके बारे में। 41 वर्कर जो हैं, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, तो इनको रेस्क्यू करने के लिए भी एफर्ट भी उतनी ही हो रही है जितनी वो समझते हैं लोग। हर साधन को नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली लॉट ऑफ वर्क वाज गोइंग ऑन, मगर ये एक परसेप्शन बन गया बाहर, बिना मीडिया के ये परसेप्शन बना हुआ था, अफवाहें फैल रही थी बाहर कि देयर इज नथिंग वेरी मच हैपनिंग, एंड ये तो 41 आदमी जो है मारे जाएंगे अंदर। दैट इज द टाइम व्हेन राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इट केम डाउन कि देयर इज अ परसेप्शन प्रॉब्लम इन द नेशन। ये एक परसेप्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, लोग समझ रहे हैं सरकार इसके ऊपर नहीं है सीरियस। हम चाहते हैं कि ये परसेप्शन भी बदला जाए, क्योंकि द नेशन इज यूजिंग एवरी पॉसिबल मीन्स। तब तक 5 या 6 दिशा से कोशिश शुरू हो गई थी टनल के अंदर घुसने की। अमेरिकन ऑगर को ले आए थे हम, तब तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू हो गई थी तब तक, मगर बाहर इसके बारे में खबर नहीं मिली थी लोगों को। That's the time I was called up. I was told कि आप be the government spokesman, speak to the media, interact with them, follow whatever norms you have, whatever experience you have in dealing with media, and ये perception change करने की कोशिश करिए। I can assure you, हमारा एक इंटरेक्शन मीडिया के साथ, नेशनल मीडिया के साथ, पीआईबी के हॉल में, चेंज द परसेप्शन ऑफ द नेशन। इट चेंज द परसेप्शन ऑफ द नेशन।
लोग क्या समझ रहे थे तब तक कि जो 41 वर्कर हैं ये सब एक कोठरी में बंद है, एक छोटी सी माइन है, उस माइन के अंदर 41 आदमी शायद एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। दे कांट ब्रीथ, खाने को नहीं है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, अंधेरा है अंदर, घुप, मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे आर हैविंग। नो, दिस परसेप्शन हैड टू बी करेक्टेड। नंबर वन, इट इज अ चैलेंजिंग जॉब है, ये रेस्क्यू कोई आसान चीज नहीं है, मगर अंदर के हालात समझिए। जब टनल की छत गिरी है, 62 मीटर छत गिरी है, जब छत गिरी है, बिजली का जो तार था, केबल था, वो टूटा नहीं, ये किसी को नहीं मालूम था, वो कॉन्ड्यूट वैसे ही का वैसे ही रहा। थ्रू आउट द 17 डेज बिजली नहीं गई अंदर, कभी गई नहीं। एक 4 इंच का कंप्रेसर पाइप था जो कंप्रेस्ड एयर से अंदर की मशीनरी को चलाता था, वो पाइप भी कोलैप्स नहीं हुआ। उस पाइप के जरिए भोपों के तौर पर कम्युनिकेशन हो सका, भोपों के तौर पर बात की अंदर, आप लोग ठीक हैं, हम लोग ठीक हैं, इतनी यहां तक। चने और गुड़ कंप्रेस्ड एयर के साथ भेज सके हम अंदर, उनको बता सके कि पानी का कुछ साधन है अंदर, जहां से ऊपर से पानी ड्रिप हो रहा है, उसको इस्तेमाल करिए, हम पानी का बंदोबस्त करेंगे आपके लिए। और 8वें 9वें दिन तकरीबन 6 इंच का एक पाइप जब हमने अंदर लगाया, तो उस 6 इंच के पाइप के जरिए प्रधानमंत्री का हुक्म था, गरम खाना अंदर जाएगा। गरम खाना कुक करके पैकेट्स बनाकर कंप्रेस्ड एयर के जरिए पानी, गरम खाना, दवाई और बहुत से और साधन, वो उनको हम अंदर भेज सके। तरकारी, फ्रूट और एक कम्युनिकेशन की लाइन लगा सके। वो कम्युनिकेशन की लाइन जब लग गई तो साइको सोशल सपोर्ट के लिए ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से 3 साइको सोशल स्पेशल डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने बातचीत शुरू की वर्कर्स के साथ, क्योंकि मानसिक तौर पे इट्स अ बिग इफेक्ट, 16-17 डेज ऑफ आइसोलेशन। जब बातचीत शुरू हो गई तो उससे डिटरमिन हो गया कि अंदर एक नेचुरल लीडरशिप इमर्ज हो चुकी है। एक 20 साल का तजुर्बेदार फोरमैन जो है, उसने अज्यूम कर लिया लीडरशिप एंड उसने कहा है कि मैं आखिरी आदमी हूं जो निकलूंगा यहां से, उससे पहले मैं सबको निकालूंगा। वंस यू हैव गॉट दैट काइंड ऑफ लीडरशिप, थिंग्स बिकम मच इजियर। उनको मोटिवेट करा और ज्यादा। ये चीजें पूरी मीडिया को हम रोज कहानी के तौर पे बताते रहे, दिस ऑल फैक्ट्स। और जब एक दफे मीडिया ने देखा कि सरकार और सरकार के स्पोक्समैन जो है वो कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं, हर चीज को ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं, कहानी के तौर पे आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो एक ट्रस्ट बैठ गया, एतबार बैठ गया बिटवीन द मीडिया एंड द ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट एंड द स्पोक्समैन। और एक बहुत अहमियत की चीज मैं आपको बताता हूं फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन कश्मीर एंड इन बीइंग इन सच सिचुएशंस। ऐसे इंटरेक्शन में अगर इतने लोग मीडिया के बैठे हैं यहां पर, आमतौर पर आखिर में 4 या 5 सवाल आएंगे। कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट लोग जो पब्लिकली सवाल पूछेंगे, जवाब भी उनको मैं देता था दफे, मगर मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं निकलूंगा बाहर, कम से कम 20 और लोग इंडिविजुअली आएंगे मेरे पास, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं थी पूछने की अंदर। वो किसी भी मजमे में होता है, यू विल ऑलवेज फाइंड ग्रेड्स ऑफ पीपल, समवन हुज वेरी कॉन्फिडेंट, समवन हुज स्क्विमिश। भाई मैं अकेले 1-on-1 पूछूंगा, एक बाइट मिल जाएगी। मैंने कहा एक क्यों, 2 मिलेगी आपको। कोई और आया, सर एक बाइट मिल जाएगी, जरूर मिलेगी आपको बाइट। आई स्पेंट next 2 hours after a media interaction, 2 hours giving 25 bites to different people to build confidence in the media. When the media is confident, जब आपको मेरे चेहरे से पहचान है, you understand that I'm not going to tell you a lie. मैं आपको सच बताऊंगा, चाहे वो जितना अनकंफर्टेबल हो वो सच। Automatically your reporting will be high class.
high standard. And you will reinforce it in your reporting that this is the genuine truth what the government is saying. ऐसे बनता है communication. Always. That is how communication comes. No, इसमें कोई absolutism नहीं है, याद रखिए. I will never tell you the absolute truth. Because there are some things I can't tell you sometimes. Even as a government spokesman, अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ चीजें uncomfortable होती हैं जो मैं नहीं बता सकता हूं. At a particular time. वो transparent हो सकता है बाद में. So don't expect complete 100% transparency. Human rights के ऊपर बहुत दफे होता है ये प्रॉब्लम कि ह्यूमन राइट्स का कोई एलिगेशन आया और आपने मुझसे पूछा एज अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन, तो मैं आपको विदाउट इन्वेस्टिगेशन आई कांट गिव यू एन आंसर एंड यू एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम मी. वो एक्सपेक्टेशन आपको कम करना पड़ेगा. यू हैव टू नो इट इज बिटवीन यू, मी एज द स्पोक्समैन एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, योर एडिटर. वो एडिटर आपके पीछे पड़ेगा. योर बॉस विल बी आफ्टर योर लाइफ. गेट द ट्रूथ, गेट अ स्कूप. मीडिया में तो स्कूप की बहुत बड़ी वो होती है, स्कोप. गेट अ स्कूप. एंड हियर द गवर्नमेंट स्पोक्समैन इज नॉट गिविंग यू अ स्कूप. I'll hold back information on that. This is reasonable. So you come to maximize. जो आपका outcome जो है of our interaction, उसको maximize करिए आप. But don't think that you can achieve the ultimate. जब आप ultimate को ढूंढेंगे, then you will come to grief. Problem होगा. Trust टूटेगा. Trust टूटेगा. Next time you will find the spokesman will not be transparent, the government will not be transparent with you. These are some of the principles that you have to live by. There are many more things one can keep on speaking on this, but I'd rather have more interaction than anything else. What I want to tell you definitely is, कि देखिए, tomorrow this subject is not going to go anywhere. ये तो बढ़ता ही जाएगा, disaster management. आप देख रहे हैं दुबई में क्या हुआ है, COP28 में क्या हुआ है, what are the conditions of COP28? If you are not studying it, then you are not increasing your general knowledge. ठीक है? Best example, आज आप गूगल करके देखिए सिक्किम डिजास्टर 3rd-4th October 2023. आपको एक एनालिटिकल पीस इंडियन मीडिया में नहीं मिलेगा इसके ऊपर. क्यों? Can someone tell me the reason? सिक्किम तो अपना ही देश है, अपना ही राज्य है. Can anyone tell me the reason why? You will find no information, no news on Sikkim. Someone who's smart, yeah, tell me. Not a bad answer, pretty good. बहुत अच्छा आपका जवाब, बहुत अच्छा है. I don't blame you. But I've got another reasons for it. बिल्कुल सही कहा आपने. You are right. You're right. आप बैठो, just sit. You are right, absolutely. The more remote an incident, the less is the reporting. ये invariably होता है. Because you don't want to make yourself uncomfortable going there. Unless your editor pushes you there. कि जाओ, और पता करके लाओ. Right? But I'll give you another reason for it. Competing stories. 3-4 अक्टूबर को रात को 10:30-11 बजे ये ग्लेशियर लेक सिक्किम के ऊपर, नॉर्थ सिक्किम में बर्स्ट हुई. इसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ आइस द साइज ऑफ 3 फुटबॉल फील्ड्स फेल इनसाइड द लेक. इट ओवरफ्लो. पानी निकला. फर्स्ट इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय आईटीबीपी, जिसके पोस्ट के पास से ये रिवर निकलता है. वो रिवर का लेवल बढ़ गया. बाय द टाइम इट रीच्ड द तीस्ता ऊर्जा डैम, द लेवल ऑफ द रिवर हैड रिजन 60 feet. डैम को खोलने की कोशिश की. 14 people died in the process of trying to open the dam. They couldn't open the dam in time. Dam got washed away. उसका असर तीस्ता बाजार पे नीचे सिल्ट लेकर आया पूरा. आर्मी के कॉन्वॉयज वहां पर पार्क थे जो वापस आ रहे थे अपने ट्रेनिंग एक्सरसाइज से.
Those got washed away. एक आर्मी का पूरा एम्युनिशन पॉइंट got washed away. Ammunition point means बिना एम्युनिशन के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो. It got washed away. 154 people got saved of that ammunition point because they ran for their life higher up. किसको मालूम है ये? किसको मालूम है? No one, none of you know it, and no one in Indian media knows it. Simply क्योंकि 7 तारीख को हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई और पूरी दुनिया का फोकस जो है वो हमास पे चला गया. हमास का भारत से क्या मतलब? हमारा अपने देश की जो आपदा थी, दैट बिकेम सेकेंडरी, एंड हमास इजराइल की लड़ाई बिकेम द प्रायोरिटी. दिस इज वेयर द मीडिया कम्स इन. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज. नॉट वन थिंग वाज रिपोर्टेड अबाउट सिक्किम. उसके 7-8 दिन बाद मैं गया सिक्किम. I had to fly in a helicopter to go all over these areas and see for myself कि क्या हुआ है यहां पर, and come back and give a report even to the PMO on this. तो आप देख सकते हैं how इसी अगर मीडिया की जवाबदारी, if the media understands its own responsibility towards the nation, automatically one segment of the media would have gone and reported about Sikkim. किसी ने नहीं किया. और कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि we can get the media to come and do this. It all depends on saleability of news, saleability of information, eyeballs for television, and things like that. So I won't go beyond that. I thought these are just a few examples, anecdotal examples more than anything else. But इससे समझ ज़्यादा आता है to understand what are the lessons for you and how you need to be conscious and sensitive about things as you progress in your careers. I'll go back to answer your questions there. Anything you have, please open your minds up to us. We'll be here for the next couple of minutes and we'll try and answer everything you can. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर. जो आपका संवाद अभी हुआ है वो एकदम हिला देने वाला है और मुझे लगता है कि उसके बाद मेरी तरफ से कोई शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है. इतना स्पष्ट आपने संवाद किया है और ये कम्युनिकेशन स्किल आप सबको सीखनी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अभी हमारे पास सर my mobile phone is flooded with lot of questions from regional centers, but first we will have questions from the students sitting in this hall. Yes, ये माइक एक बार दे दीजिए. मेवालाल जी किसी को लगा दीजिए. आप अभी पूछ लीजिए, अभी समझ में आएगा. थोड़ा जोर से बोलिए. जैसे कि अभी आपने बात की कि सिक्किम वाले को हमने अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाई, मीडिया ने. तो उसी से जुड़ा एक सवाल है कि जैसे कि कुछ घटनाएं होती है, जैसे कुछ लगभग 1 साल पहले उत्तराखंड के जोशीमठ में जो घटना हुई, तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर लैंडस्लाइड के ऊपर और वहाँ की क्या कंडीशंस है उसके ऊपर डिटेल में इन डेप्थ आर्टिकल्स भी पढ़े, लेकिन वो धीरे धीरे उन आर्टिकल्स की जो संख्या थी वो कम होने लगी. फिर धीरे धीरे करके वो गायब हो गए. तो इसका कोई परमानेंट मतलब सॉल्यूशन परमानेंट तो नहीं है, पर उससे कुछ इम्पैक्ट भी नहीं आया. तो सर ये स्टोरीज हम कब तक कंटिन्यू करनी चाहिए हमें एज अ जर्नलिस्ट, कि उससे कुछ इम्पैक्ट आए, या फिर जब तक इम्पैक्ट ना आए तब तक हमें वो स्टोरी करते ही रहनी चाहिए? ये मेरा सवाल है. बहुत बढ़िया सवाल पूछा. आई मस्ट से वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी टॉपिकल क्वेश्चन. और इसमें एक आपके सवाल में एक सबक आता है कि कोई भी चीज आप शुरुआत करेंगे जिसकी, उसको डोंट बी सेटिस्फाइड कि मैंने शुरू कर दिया. जब तक आप उसका कल्मिनेशन नहीं पहुंचेगा, अंटिल द क्लोजर नहीं होगा, तब तक उसको आप इन्वेस्टिगेट करते रहो. राइट.
अब आपको मैं खबर दे सकता हूं ये कि जोशीमठ के केस में ऑलरेडी एक फाइनेंशियल ग्रांट दे दिया गया है. आई थिंक 1600 to 2000 crores has already been given. ये शायद मीडिया में नहीं आया है इस वक्त, बट दिस मनी हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. साथ में एनडीएमए, एनडीएमए हैज बिकम अ कोर्ट दीज डेज. हम मेंबर्स ऑफ एनडीएमए तकरीबन हर 15 दिन पर एक कोर्ट हियरिंग कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट, जहां के उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एम्पावर किया है हमको कि बीइंग अ टेक्निकल अथॉरिटी, लेट अस हियर द वेरियस arguments on behalf of the people who have complained against this entire thing, and उसको सुनने के बाद हम अपनी ओपिनियन जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट को दें. So this is going on at the moment. शायद इसके ऊपर तभी जैसे मैंने आपको कहा कि चर्चा इस पर नहीं हुई है ज्यादा. It's not been very transparently sort of shared everywhere. क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें 100% कभी नहीं मिलेगा आपको. कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपको करना पड़ेगा, एंड देयर मे बी सम थिंग्स ऑन विच ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिक हो जाएगी. अब जैसे इसके अंदर सरकार ने ऑलरेडी पैसा दिया है आपको, अगर इन्वेस्टिगेट करें तो आपको यू प्रॉब्ली कम अक्रॉस द फिगर्स ऑल्सो. ठीक है कि ये एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही इसका पैसा दिया है, तो देव यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि कहां से पैसा आया है, कितनी रकम आई है, कहां इसका जो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कहां शिफ्ट किया जा रहा है, अल्टरनेटिव अकोमोडेशन कौन बना रहा है, वो अकोमोडेशन उसकी इंजीनियरिंग कौन कर रहा है. ये सब मामला जो है हैज ऑल बीन ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड अ क्लोजर ऑन ऑल दिस. तो मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूं इसके बारे में अबाउट द केस, बट योर इशू इज वेरी करेक्ट. जो आपने इशू खड़ा किया है कि कभी कभी कुछ मैटर्स सेंसिटिव हो जाते हैं. जोशीमठ इज अ सेंसिटिव केस, ना कि सिर्फ बिकॉज इट इज अ पॉपुलेशन सेंटर, मगर दूसरा बिकॉज इट्स अ बॉर्डर स्टेट, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चमोली इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट. वहीं मैं गया हूं चमोली में फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द तपोवन डिजास्टर, और उसी के ऊपर रास्ता नंदा देवी के मैसिव की तरफ से रास्ता जाता है, इट गोज ऑन टू द बॉर्डर है. तो उसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना, ज्यादा छानबीन करना बिकम्स अ लिटिल सेंसिटिव समटाइम्स. इज फॉर दिस रीजन मोर कि इस पे शायद ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है. Sir, I have a question, sir. I am Nitigya Pant from English Journalism Department, sir. Sir, after every disaster, a common churning takes place that whether development should be there or environment should be sustainably managed. Further, sir, this debate also works in binaries. One view is that there should be no development of such vulnerable regions and environment should be safeguarded. And sir, this also the problem with this argument is that it delays development in such certain regions. How should reporting be done while handling disasters so that the trauma of disaster does not lead to delaying of development, sir? Again, I must say I'm getting very impressed by IIMC. Your quality of questions is improving by the minute. Right? It's outstanding. बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने. Let me tell you, ये जब तक, as long as life is on the planet, this problem will never be resolved 100%. Development against ecology. ठीक है? अब आप उत्तराखंड में देख लीजिए, चारधाम यात्रा पे देख लीजिए आप. You see, Uttarakhand is a tourist based economy. Hardwar hai, Chardham hai, and places like that. It generates a tremendous amount of money coming in to the state's coffers. तो अगर आप facilitate करते हैं चारधाम यात्रा को from an angle of infrastructure, it only adds to your treasury. But what effect it has on the ecology, we also know. How to come to a via media is the biggest challenge for all of us. और ये challenge I don't think can ever be overcome. But इसको जैसे मैंने कहा maximize करें आप. अब मीडिया मुझसे पूछते थे during the Silkyara tunnel rescue कि सर ये don't you think कि ये ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ गई ये बात कि हर तरफ टनलिंग हो रही है, पूरे चारधाम के ऊपर हर तरफ टनलिंग हो रही है,
ये पहाड़, हिमालय के पहाड़ जो हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये तो ऑटोमेटिकली दे आर अर्थक्वेक प्रोन, दे आर वेरी ब्रिटल माउंटेन्स एज इट इज. तो मैं उनसे कहता था कि देखिए, देयर इज नथिंग विच टेक्नोलॉजी कैन नॉट ओवरकम, राइट. अगर एक हवाई जहाज पैसिफिक के ऊपर क्रैश हो जाता है तो सिविल एविएशन डज नॉट कम टू अ हॉल्ट, ठीक है. सिमिलरली अगर एक कंटेनर शिप फ्रॉम चाइना कमिंग थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का एंड कमिंग टू मुंबई sinks anywhere in the Bay of Bengal, China will not stop all shipping. So similarly, it may be a cruel remark, but अगर इस तरह का collapse हुआ है, this is a coincidence. It's not a deliberate thing that someone has done it for the sake of it. We will find better technologies. We will improve our method of construction. We will seek greater international assistance and understanding this. इससे हम बढ़ाएंगे to minimize the possibility of this kind of a disaster happening in the future. Although I cannot guarantee it. जोजिला का टनल बन रहा है, तवांग का टनल बन रहा है, अटल टनल बन चुका है, उनमें तो नहीं हुआ कुछ अभी तक. मैं यहां पर सिलक्यारा में हो गया. It just happened. So this argument and this debate will continue. That what the media should be doing in this, that's the most important part of your question. What the media should be doing is transparently providing the information to the readership. Okay, देखिए, these are the inputs you have on the possibility of a disaster in the future. ये history है यहाँ disasters की. This is the ecology of this area. You need better technologies in which you are not investing enough money yet. The chances of a disaster here is high. You sensitize the government, you sensitize the public, you get the public to put pressure on the government. That is your work. Right? That is definitely your work. Be involved in this debate, which is an unending debate. ये जब तक, जैसे मैंने कहा आपको, जब तक इंसान इस धरती पर है, तब तक ये डिबेट खत्म नहीं होगा. जय हिंद सर. सर मेरा नाम है राहुल रहेजा. सर मेरा क्वेश्चन था, कुछ टाइम पहले जैसे अभी एक रेल एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें काफी लोगों की जान गंवा दी थी काफी लोगों ने अपनी. तो सर एज अ जर्नलिस्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब मैं वहां पहुंचूं ऐसी जगह पे तो मैं कैसे रिपोर्टिंग स्टार्ट करूं और क्या क्या मुझे काम करना चाहिए कि सरकार और जो लोग हैं उधर जो फंसे हुए हैं उन दोनों को फायदा हो. आपने लगता है जो मैंने प्रेजेंटेशन में आपको 2-3 स्लाइड्स दिखाई थी, उनको दिखाने का उद्देश्य ही ये था कि अब जब वहां पहुंचे तो आप उस तरीके से एक सिस्टमेटिक, एक सिलसिलेवार तरीके से काम करें, एक सीक्वेंशियल तरीके से काम करें. जब आप उस तरीके से काम करेंगे और इमीडिएटली डेड बॉडीज और कैजुअलिटीज और इंजरीज उनके ऊपर फोकस करने के बजाय जब आप जो फोकस एरियाज मैंने आपको दिखाए उस तरीके से काम करेंगे तो आपकी स्टोरी एक डेवलप होगी, जो बिल्डअप होगी वो एक हेल्दी बिल्डअप होगा. तो एक उस प्रेजेंटेशन को दोबारा आप देखिएगा और इनके साथ शेयर कीजिएगा, उससे आपको मदद मिलेगी. ये जो हमने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. जैसा सर ने बताया, नथिंग इज सेक्रोसेंट, बट आपको अपनी इथिक्स और अपनी जो वैल्यूज हैं और कमिटमेंट जो है सोसाइटी के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, उसको नहीं छोड़ना है, तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा. सर मेरा नाम तरुण दास है सर, मैं डिजिटल मीडिया का छात्र हूँ. मेरे 2 क्वेश्चन है. एक पहला क्वेश्चन है कि युद्ध की स्थिति में या फिर कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ हो, उस स्थिति में वहां के जो लोकल सिविलियंस हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्रॉस फायरिंग से या फिर कुछ क्रॉस बॉम्बिंग से सर? क्या इसमें एनडीआरएफ का रोल आता है? एंड दूसरा क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली जो चेन्नई में फ्लड्स आया था उसका एक बड़ा कारण था कि उनके वहां पे जो चेन्नई की लोकल वाटर बॉडीज थे उनको रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन ने एंक्रोच कर दिया. तो ऐसे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं और अनएथिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको पहले ही बनने से रोकने के लिए कोई बॉडी नहीं बन सकती सर? इनके ऊपर ग्राउंड लेवल पे कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं हो सकता सर? इसीलिए हमने कई बार पिछले आधे घंटे में जो एम्फेसिस दिया जा रहा है
वो ये कि रिसर्च, हाफ बेक नॉलेज नहीं। जो आइडिया आपके अंदर आए हैं कि चेन्नई में ऐसा हुआ, अगर आपने एनडीटीवी का शो देखा हो, पिछले 4-5 दिन पहले ही आया था, तो जिस तरीके से उन्होंने पूरी चेन्नई फ्लड्स को डाइसेक्ट किया, वो उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जैसा सर ने बताया कि ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है, हमें एक्सपेंड भी होना है, डेवलप भी होना है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, नेचर की तरफ से भी प्रहार हो रहे हैं। चेन्नई फ्लड्स, चेन्नई के जितने कई हजार टैंक्स, कई सौ टैंक चेन्नई के हैं, वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, सबकी डिसिल्टिंग हुई, इसको सब जर्नलिस्ट ने अप्रिशिएट किया। लेकिन उसके बाद भी वहां फ्लड हुआ, तो उसके बहुत सारे कारण है। कभी वहां किसी एरिया में फ्लड होता है, कभी दूसरे एरिया में फ्लड होता है। तो अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त रखेंगे, अप टू डेट रखेंगे, तो शायद ऐसे सवाल पूछने से पहले थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, टेररिस्ट इंसिडेंट एक सिक्योरिटी इंसिडेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारे देश की, वो उसको हैंडल करेंगी। और जब आपदा आएगी उसके बाद जो रोल होगा, अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो वो आपदा से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हैंडल करेगा। सर मैं ऐड कर देता हूं 2-3 चीजें आपके लिए। एक तो जो आखिर में बताया कमलनाथ आदित्य साहब ने, याद रखिए एनडीआरएफ, आपके दिमाग में बैठा है कि एनडीआरएफ एक्ट्स ड्यूरिंग अ काउंटर टेररिज्म एक्शन। एनडीआरएफ हैज नथिंग टू डू विद काउंटर टेररिज्म। एनडीआरएफ जो है पीस टाइम फोर्स है, जो आपदा के लिए है। वो हथियार भी नहीं कैरी करते, दे डोंट इवन कैरी अ नाइफ विद देम, ठीक है। उसके लिए एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मानेसर से आएगा, आर्मी के कमांडो यूनिट्स आएंगी, ठीक है, कुछ बीएसएफ की भी यूनिट्स होती हैं इसके लिए, ये सब करेंगी उसके अंदर, ठीक है। एंड मुंबई जैसा हमला जैसे हुआ था 26/11 जो हुआ था, विच वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इवेंट, उसके अंदर मीडिया का रोल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपने देखा तो उसके अंदर एक तो आपको महसूस करना कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है उस समय, बिकॉज दिस अ लाइव सिचुएशन जो चल रहा है। आपको याद है उस वक्त लाइव सिचुएशन टेलीविजन पे बताने से पाकिस्तान में उनको लाइव सिचुएशन मालूम हो रही थी और वो इंटरनेशनल सैटेलाइट फोन के ऊपर डायरेक्शन दे रहे थे टेररिस्ट को। वो कभी नहीं करना है, अपनी जवाबदारी समझनी है एज मीडिया, ठीक है। ऑन दिस चेन्नई इशू इट्स गुड टू अंडरस्टैंड, कमलनाथ आदित्य और मैं 4 हफ्ते पहले चेन्नई में थे और हमने बड़ी एक्सरसाइज की थी वहां पर, मॉक एक्सरसाइज इसी के ऊपर, फ्लड के ऊपर। और आपको खुशी होगी जानकर कि अभी फीडबैक जो दे रहे हैं एसडीएमए वहां से, वो कह रहे हैं कि अगर हमने मॉक एक्सरसाइज नहीं करी होती तो बहुत सी जाने जाती वहां पर। 2015 में इससे, उस टाइम पर भी इससे कम सैलाब आया था, मगर जाने ज्यादा गई थी। इस दफे 20 लाइव्स आई थी, 22 लाइव्स, 20 या 22 लाइव हुई है, 20 लाइव्स have been lost, और 55 सेंटीमीटर रेन इन 24 आवर्स, अनहर्ड ऑफ इन द सिटी ऑफ चेन्नई। तो ये फैक्ट्स जो है ना, इनको सही समझना चाहिए बिल्कुल, और एनालाइज करना चाहिए इनके अंदर बिफोर यू पुट इट इनटू योर माइंड एंड स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग। सर एक आप अभी जरा रुकिए, एक क्वेश्चन हमें अमरावती वहां से लेना है, ढेकनाल से। ऑनलाइन भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी कैंपस से, तो उन्हें भी हमें एड्रेस करना है। सर एक क्वेश्चन है ढेंकनाल कैंपस से, इंग्लिश जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं आनंद पाठक। हाउ कैन द मीडिया हेल्प इन काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स ड्यूरिंग एंड इमरजेंसी? कमलनाथ आदित्य ने जो काफी हद तक ये कवर करा था अपने प्रेजेंटेशन में, सवाल जो उन्होंने पूछा है वहां से, उस कैंपस से, वो ये है कि हाउ कैन द मीडिया हेल्प इन रिमूविंग मिसकंसेप्शंस, डिसइंफॉर्मेशन। याद रखिए, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ
misinformation, disinformation, fake news, everything. Social media has empowered every single finger. Every single finger is empowered these days. Write something and send out a piece of information. And on the other side, on the other side, in Pakistan की जो पब्लिक रिलेशंस मीडिया मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? ISPR. सब जानते हैं कि ISI क्या है. सबको मालूम है भारत में ISI क्या है, कि पूरे टेररिस्ट जितने हैं घूम रहे हैं इधर उधर, उनका कंट्रोल ISI करती है. ISPR किसी को नहीं मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम. आप प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं या मीडिया को देख रहे हैं, सो यू हैव एन आइडिया ऑफ ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस. कब खड़ा हुआ ये? एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू, गुड. 1949, वेल बिफोर द ISI. ISI से बहुत पहले खड़ा हुआ था ये. व्हाई? पाकिस्तान ने रियलाइज किया दैट एज अ स्मॉलर नेशन, फॉर देम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि इंफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. दे अंडरस्टूड इट. हमने कभी ये नहीं समझा. वी आर अ लार्जर नेशन, वी आर अ डाइवर्स नेशन, वी आर अ नेशन विद फार रीचिंग कॉर्नर्स, मगर हमने इंफॉर्मेशन की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी. एंड देयरफॉर आवर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑलवेज क्वेश्चनेबल कंपैरेटिवली कंपेयर टू व्हाट इट कैन बी, हाउ इफेक्टिव इट कैन बी. और जब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. I can tell you from my experience, during COVID, I was placed on the Empowered Committee number 8 on management of media and information for COVID. हमारा काम था कैसे रूमर्स को निकालना, मिस इन्फॉर्मेशन, जो अभी जिसके बारे में सवाल पूछा है, हाउ टू रिमूव मिस इन्फॉर्मेशन, how to do a powerful messaging of the government's intent, how to bring about the 3 issues of COVID, anti-COVID, hand washing, distancing and masking, how to make it a part of the existence of every human being. Social media, television, print media, advertising, posters, leaflets, All India Radio, every single means we used from the Information and Broadcasting Ministry. जब INB मिनिस्ट्री के पास सब साधन है, the moment the INB ministry takes it upon itself to resolve an issue, to remove a misnomer, to counter any kind of rumor, you will find a very, very effective campaign starts. But for that you have to sensitize the right people have to understand it, तब जाके ये होता है. I would strongly say कि अगर हमारे पास कल्चर है ऑफ इंफॉर्मेशन एट द लोएस्ट लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट में, एट द स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत लेवल पर, वहीं से शुरू होना चाहिए हमारा काउंटर इंफॉर्मेशन, काउंटर मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन. शुड नॉट लीव इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू ओनली डू दिस टास्क. यहां तो प्रोफेशनल्स हैं, ये कल्चर हमको बनाना पड़ेगा. As social media becomes more and more powerful, as artificial intelligence keeps on increasing, this enhancement of empowerment at the lower levels will have to keep increasing. Yes. हेलो सर, मेरा नाम नरगिस है. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी आपदा हो जाती है उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन आपदा से पहले किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, सरकार की या मीडिया की? जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ या सिल 11 हुआ, उससे पहले क्यों नहीं किया जाता है चीजें? जैसा एनडीएमए का जो मेन रोल है वो रिस्पांस में कम और प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन में ज्यादा है. अगर आप देखेंगे तो हम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सभी स्टेट्स यूटीज में काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी एजेंसीज के साथ काम करते हैं, कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन पे, और हर फील्ड में काम करते हैं.
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट है उन प्रोजेक्ट्स में, केवल इसलिए कि जब आपदा आए तो उस समय मिनिमम कैजुअलिटीज हो, मिनिमम जान मान की हानि हो, मिनिमम हमारी कम्युनिटी लाइफ लाइन्स डिसरप्ट हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना रहे। तो इसके लिए बहुत काम चल रहा है पूरे देश के अंदर और सब जगह काम चल रहा है। तो ऐसा जो आपको लगता है कि केवल आपदा जब आती है तभी मशीनरी गवर्नमेंट की एक्शन में आती है, ऐसा नहीं है। तो जो आपदा आती है तब आपको एनडीआरएफ के लोग दिखते हैं, एनडीआरएफ के लोगों का काम ही रिस्पॉन्ड करना है, बट उससे पहले जिन लोगों ने काम किया है वो बहुत बड़ी संख्या है उनकी, और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस बारे में काम करते हैं। यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी साथ में जुड़े रहते हैं, एनजीओज भी साथ में जुड़े रहते हैं। अगर आप कोस्टल एरिया से तो आपको पता होगा कि कितने साइक्लोन शेल्टर्स, हजारों साइक्लोन शेल्टर्स हमारे कोस्टल एरियाज में बन गए हैं। तो वो हमने केवल आपदा का इंतजार नहीं किया, वो आपदा से पहले जहां भी आपदा आ सकती है, जिस तरह की आपदा आ सकती है, अगर साइक्लोन आएगा तो वहां साइक्लोन शेल्टर बनेंगे, अगर कहीं और किसी तरीके की आपदा आएगी तो वहां उस तरीके का काम होगा। तो काम हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे काम होता रहता है। आपदा आती है तो आपको दिखता है वो टीवी चैनल्स पे, अदरवाइज वो जो ग्राउंड वर्क है, जो प्रिपरेटरी वर्क है, मिटिगेशन का वर्क है, वो आपको कम नजर आता है। इसीलिए आपको उसकी भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। यस, लास्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसमें और क्लैरिफाई कर दूं, आपका काम है, इट इज योर वर्क टू मेक श्योर कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में आपदा के ऊपर। ओके मिस्टर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, प्लीज जस्ट कीप क्वाइट। इनके बाद आप ये लास्ट। यस, डोंट वरी। मैंने आपको प्रिंसिपल बताया मेरा कि मैं 3 घंटे बैठूंगा अंटिल आई सेटिस्फाई एवरी सिंगल पर्सन। यस 6 घंटे भी बैठ सकता हूं मैं, चाय आप पिलाएंगे। सर, ठीक है। लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम द यंग लेडी। मैं आपका सवाल जवाब देना चाहता हूं फुली। हाँ सर। यू मे नॉट नो, आप बाद में पहले आप पूछिए। G20 जब हो रहा था यहां पर, आपने शायद देखा नहीं, उस वक्त दुनिया भर का मूवमेंट चल रहा था। पालम एयरपोर्ट IGI 3 पे क्या, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉल, वो जो नया हॉल है, भारत मंडपम पे, बाकी जगह पर एनडीआरएफ, एनडीएमए वाले, आर्मी, एनएसजी सब लगे हुए थे। किस चीज पे? CBRN पे, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर रिस्क, कि कोई ये ना हो कि आकर एक छोटा सा केमिकल यहां छोड़ दे। पूरी तैयारी उसके लिए 15-20 दिन तक पूरी दिल्ली पुलिस का कोऑर्डिनेशन हमने किया, एनडीएमए ने तैयारि का। उस वक्त कोई आया नहीं सामने मीडिया का पूछने के लिए। अच्छी बात है नहीं आया, क्योंकि शायद लोगों को मालूम भी नहीं होना चाहिए था कि हम इतने जोरों में तैयार हैं। ठीक है, मगर ये काम आमतौर पर मीडिया का होना चाहिए कि इस तरह की चीज को भी रिपोर्ट करना चाहिए। यस, हेलो सर। एक मिनट, इनके बाद आप। नमस्कार सर, मेरा नाम अदिति है और मैं हिंदी पत्रकारिता विभाग की छात्र हूँ। सर, अभी हमने मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। सर, आई गेस देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। इट इज द विलिंगनेस ऑफ वन दैट इज अ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फॉर द अदर। सर, हमने देखा है थोड़े दिन पहले हमारी एक साइंस रिपोर्टिंग की क्लास में हमने सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा। साइंस फिनोमिना होता है, बट स्टिल सबको पता है वो साइंस फिनोमिना होता है, फिर भी एक एस्ट्रोलॉजर हर टीवी पे बैठा होता है जो ये बात बताता है कि आज सूर्य ग्रहण होगा, आप घर से बाहर मत निकले, खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे। Everybody knows it is a willingness of one that is making it misinformation or disinformation for the other. Okay. Very interesting observation. मगर मैं आपको बता दूं, it's not so innocent. There's not such an innocence in this. Social media is a weapon. Since you are with media, you don't realize the value of this as a weapon. जैसा मेरा दिमाग है ना, मेरा दिमाग इतना डिवियस दिमाग है. I have a very dirty mind. I can create problems for thousands of people only through using 2-3 words, because I've been trained like that, right? अगर पाकिस्तान के अंदर मैंने प्रॉब्लम खड़ा करना है कुछ, I have to just put one tweet of mine into Pakistan and that is sufficient to create a problem somewhere.
right? Now, याद रखें, one man's terrorist is another man's freedom fighter. Perception अलग अलग रहेगा. मगर when you look at yourself, you have to consider your nation. हम भारत के हैं, भारतवासी हैं. Our interest is disturbed, our interest has been affected. That becomes a weapon against me. So a disinformation which is affecting me in this manner is a weapon against me, which I must counter. I can't treat it so innocently as you were saying, that one person's information is someone else's something else. I can't treat it that way. I have to make sure that I treat it as if it is going to affect me adversely. And that is what mostly you will find social media today as a weapon. That's how it is being used. सर अभी आप I think this lady we are not, yeah. My name is Bhargavi and I am from English journalism. My question is that on Sikkim issue there is an ethical dilemma. Whether we have to do reporting for revenue generation, there is political pressure, industry pressure or so many others. So news in today's era of fast-paced journalism or from reporting from far away like remote area is always challenging. So what are the things we have to overcome such type of personal and professional circumstances? And my another question is that बेटा एक ही सवाल रखिए. yeah, Only one question. sir, बस वो relatable है. My another question is that you talked about the roles and responsibilities of the media, but who cares about the life of a media person if such kind of tragedy happened with them while on ground reporting? Luckily, in this hall, a lot of questions are coming on Sikkim. So if sir permits, I would like to add one thing. If any of you have read a very detailed report on Sikkim disaster in one of the foreign media, and if you see the kind of research they have done, our reporting is nowhere near that research. And they're all our own people. They are not the foreign experts which are coming here. The foreign media here, they follow a different pattern. They take out the experts from our own society and reach out to them and then construct a full report. So this kind of research is lacking in our reporting. So this was very much apparent from the Sikkim, the way the entire thing was. The report came out, I think, 10-15 days later after the Sikkim incident. But it was eye-opener. And nothing, no expert from any foreign university or any foreigner came to that place, visited that place. But it is the local people from the local universities who were doing, who were understanding the nature of the hills, the landslides, the glaciers. The foreign media could identify such experts, got reports from them, collated it, and presented a unified report, which became a milestone in this Sikkim thing. As far as media safety is concerned, security, safety, law and order, these are, every profession has got a risk. I think sir will be able to answer this much better. No, very good. This was very well explained by Commandant Aditya. I will take your mind back to what is called embedded journalism. You know what is embedded journalism? Who will explain me the term embedded journalism? One sec. अरे थोड़े वो करिए, थोड़े धैर्य रखिए थोड़ा सा. We'll be here with you for the whole night, don't worry. Right? It's a very simple term, embedded journalism. 1990 में Gulf War One में, by that time satellite television had come into being. उससे पहले satellite television नहीं था ज़्यादा. When satellite television came into being, CNN introduced a new concept. It's called war in the drawing room. आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, most of you. I watched the whole war from my drawing room. पूरी लड़ाई. Who brought the war to my drawing room? Embedded journalists. ये वो थे जो हर आर्मी की यूनिट के साथ embedded थे. You are part of so and so 5 cavalry. 5 cavalry के साथ 2 जर्नलिस्ट होंगे. टैंक पर बैठेंगे, टैंक के अंदर बैठेंगे, टैंक के नीचे रहेंगे, हर जगह रहेंगे.
राइट? नाउ योर, जैसे जैसे आपका प्रोफेशन और इन्वेस्टिगेटिव होता जा रहा है और ऑब्ट्रूसिव होता जा रहा है, योर रिस्क इज इंक्रीजिंग. यू हैव टू डिसाइड कि मैं रिस्क लूंगा कि नहीं लूंगा. यू हैव सीन व्हाट्स हैपेंड इन गाजा. Who all have died in Gaza? There are lots and lots of posthumous awards also for media people. I'm sure you are not looking for those, right? But your profession demands a certain risk. If you want transparency of information to reach your readers and your viewers, etc., that risk will have to be taken. But the advice is always, there is a limit to everything. You can't say, I will go into the headquarters of Hamas with a grenade in my hand and take a photograph of grenade being thrown inside. Naturally, that's committing suicide. You're a suicide bomber more than anything else. So, ये risk की बात जो है ना, it's all situational. What is the pressure on you? What is the demand on you? What is your inner feeling about things? All that will come to the fore. जी सर, मेरा नाम जसारत अली है. सर आपसे पहले वो पीछे. हेलो सर. हेलो. हाँ सर, आपने अभी बोला, आप जब बता रहे थे डिजास्टर रिपोर्टिंग के बारे में, तो आपने बताया कि हमें अथॉरिटीज पे जो रिलीफ का काम करते हैं उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए. लेकिन जब हम प्रेशर नहीं डालते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि जो ग्राउंड पे जो कैजुअलिटी हो रही हैं और जिनके जान पे बन आई हैं, अभी हमें लगता है कि क्वेश्चन उनका जान ज्यादा बड़ा है आपके हमसे क्वेश्चन पूछने से, मुझे लगता है ऐसा. और जो फैमिली सुबह सुबह अखबार उल्टाते हैं, टीवी देखते हैं, वो ये आशा रखते हैं कि हमारा क्वेश्चन उन अथॉरिटीज से पूछा जाएगा. ये वी आर द वॉइस ऑफ पीपल आफ्टर ऑल. तो आप जो बोल रहे थे अभी कि प्रेशर नहीं डालना चाहिए अथॉरिटीज पे जो रिलीफ का काम करते हैं, तो मुझे लगता है ये इनजस्टिस हो जाएगा. जो लोग हमसे आशा रखते हैं कि हम उनका सवाल पूछें आपसे, तो अगर ये सही नहीं है तो फिर बैलेंस कैसे बनाएं? अच्छा सवाल है आपका. सवाल अच्छा है. आपकी जवाबदारी कुछ है और मेरी जवाबदारी कुछ है. एंड समवेयर द टू मस्ट मीट करेक्टली. जो आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है. आपके ऊपर भी कोई पब्लिक प्रेशर है, आपके ऊपर कोई पब्लिक जवाबदारी है, where you are required to ask that question. And there is a certain public responsibility I have got to ensure I give you just the right answer, not more than that. अब कौन किससे सेटिस्फाई होता है? इसी अगर आइडियल सिचुएशन है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, तो आपका सवाल मेरे पास आएगा, मैं 100% जवाब आपको दूंगा. होपफुली बोथ विल बी सेटिस्फाइड. बट ये स्थिति कभी आती नहीं है. दिस सिचुएशन is a utopian situation. ठीक है? There will be always a certain situation in which holdback of certain information till the right time will be required. ठीक है? For example, जैसे मैं आपको कह रहा था पहले कि 26/11 में जब 26/11 का हमला हुआ, तो that is the time when they took the decision कि जो भी हम टेलीविजन पर लाइव दिखा रहे हैं उसको 15 मिनट या 30 मिनट डिले होगा उसके अंदर. वो फ्रॉम द जर्नलिस्ट एंड इट विल बिकम एज इफ ही इज टॉकिंग लाइव, मगर एक्चुअल बीमिंग जो है वो 30 मिनट्स लेट होगी. यू आर अवेयर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट विच इज देयर. नाउ जर्नलिस्ट वर वेरी एंग्री ऑन दैट. मुझे याद है अर्नब गोस्वामी तो बड़ा वो नारे लगा रहा था टाइम्स नाउ पर उस टाइम पर. ठीक है? बट ही हैड टू कम डाउन टू मदर अर्थ बिकॉज इट वाज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू. कि आप लाइव दिखाएंगे यहां पर तो वही खबर जो है जो दुश्मन ढूंढ रहा है वही खबर आप उसके हाथ में दे रहे हैं. यू आर पुटिंग योर ओन ट्रूप्स टू डेंजर. सो देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक. देयर इज ऑलवेज अ कॉम्प्रोमाइज विच विल हैव टू बी देयर एज लॉन्ग एज वी अग्री टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कॉन्फिडेंशियलिटी. कि इतना यहां तक मैं कॉन्फिडेंशियल हूं, इतने यहां तक आप अपने सवाल को रोक पर रोक रखेंगे. आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर बिटवीन अस. I have never had a problem with journalists, let me tell you. और मेरी मुद्दतों की जर्नलिस्ट के साथ एक्सपीरियंस है. In every rank and service, I have always had something to do with the media. But my relationship with the media has been always outstanding because of transparency. But that transparency, I can assure you, was never 100% at any time. It was always with national interest
and the interest of the army where I was at that time. Today, on the interest of the disaster management community. थैंक यू सर। सर मेरे पास अभी एक मिनट जी सर, एक मिनट बैठिए। मेरे पास दूसरे कैंपस से अभी 47 क्वेश्चंस हैं। ये बातचीत बहुत लंबी चलेगी, इसलिए मैं उर्दू डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को ही रोक रहा हूं, इसलिए और आगे हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, डीन एकेडमिक्स, टू प्लीज प्रपोज ए वोट ऑफ थैंक्स विद कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी। मंच पर बैठे हुए हमारे आज के मंच पर बैठे हुए हमारे जब गुरु खड़ा होता है सामने, बिल्कुल सब चुपचाप रहते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि जनरल अता हसनैन जी और एनडीएमए के दूसरे सदस्य कमांडर आदित्य कुमार जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे फैकल्टी के साथी, अब एक ही बज गए हैं उससे पहले जो चले गए हैं उनको भी, और साथ में आप सभी बहुत प्रेम से जो सुन रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, और बाहर जो हमारे सेंटर से जुड़े हुए हैं वो सब साथी भी, फैकल्टी मेंबर्स भी और सब स्टूडेंट्स भी। ये वाकई बहुत अद्भुत सेमिनार रहा आज का, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन रहा। मुझे लगता है कि मेरे लिए भी बहुत सारी बातें जो है वो नई थी और मैंने बहुत प्रेम से सब चीजें नोट की, क्योंकि मैं मूलतः एक पत्रकार रहा हूं और हमारी ये आदत है कि जब भी किसी कार्यक्रम में कहीं भी जाते हैं तो कागज पेन लेकर के चलते हैं और नोट करते हैं। तो मैंने भी बहुत सारी बातें नोट की और बहुत ही वाकई लर्निंग एक्सपीरियंस जो है गजब का था आज का। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग आपके बीच में हैं जो आपको एक नए विषय की बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से जो है वो जानकारी दे रहे हैं। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तब डिसास्टर कोई बीट नहीं थी, अभी भी शायद बहुत ही कम होगी, लेकिन तब तो बिल्कुल नहीं थी। और आपदा जो है एक ऐसा विषय था जो कृषि मंत्रालय के अधीन आता था, और जब कोई बड़ी समस्या होती थी, अब अकाल या कुछ बाढ़ की समस्या, तभी वो ली जाती थी, अदरवाइज आपदा कोई विषय नहीं था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारे देश ने, हमारी सरकारों ने और हमारे लोगों ने भी इसको बहुत गहराई से समझा है और आपदा पर जो है काफी काम हुआ है। पिछले खास करके जब से हमने नई वेदर जानने की जो नई मशीनें मंगाई हैं पिछले 8-10 साल में, बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। और अब जो सुनाई देती है, जो मतलब खास करके साइक्लोन या जो बाढ़ या दूसरी जो समस्याएं होती थी, जिनके बारे में थोड़ा सा पहले से मालूम पड़ जाता है, जो जनरल साहब ने बताई, तो वो जो समस्याएं थी वो अब वैसे नुकसान नहीं दिखते, क्योंकि उनकी मतलब पहले से तैयारी हो जाती है, पहले से अलर्टनेस हो जाती है, तो इसलिए नहीं हो पाती। तो एक तरह से ये जो मामला है वो काफी हमारे देश में काम हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है, और एनडीएमए का इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जिस तरह से आज समझाया वो बहुत हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। आप लोग जाएंगे अपने अपने फील्ड में, जिससे अखबार में जाना है, टेलीविजन में जाना है, डिजिटल में जाना है, जो जहां भी जाएंगे वहां निश्चित रूप से ये सब चीजें आपके काम आएंगी। और बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है, जो बताए हैं हमारे जनरल साहब ने और कमांडर साहब ने, वो सब आपके काम आने वाला है। पहले सिर्फ जो है डिफेंस के लिए एक कोर्स होता था 2 महीने का या 3 महीने का, जिसमें डिफेंस करस्पॉन्डेंट्स कोर्स, वार करस्पॉन्डेंट कोर्स होता था, जिसमें 3 महीने या 2 महीने करस्पॉन्डेंट को आर्मी के साथ ही जो है वो जा करके ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन डिसास्टर जो है उससे भी बड़ा मुद्दा अब आ गया है, क्योंकि हर रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या हमको दिखाई देती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है हमारे आज के जो 2 अतिथि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि, जिसमें जनरल सैयद अता हसनैन जी और कमांडर आदित्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एनडीएमए के बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं, हमारा इंस्टीट्यूट जो है बहुत आभारी हैं। पिछले साल भी आप लोग आए थे और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को आप लोगों ने समझाया था,
और वैसे भी जब भी मौका मिलता है तो आ जाते हैं। हमारी डिफेंस का जो कोर्स होता है उसमें भी जनरल साहब जो है अक्सर आते हैं और हमको गाइड करते हैं। तो मैं आप दोनों जनों का हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे डायरेक्टर जनरल की तरफ से, हमारे एडीजी साहब की तरफ से, हमारे तमाम फैकल्टी के साथियों की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उसके अलावा मेरे साथी जो प्रमोद जी, प्रोफेसर प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ आयोजित करवाया आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके अलावा जो है आप सभी स्टूडेंट्स जो है उनका बहुत बहुत आभार, जो आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत बड़े तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ आप लोग सुन रहे हैं और सवाल सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सवाल भले ही यहाँ नहीं आपका सवाल आया हो, लेकिन आपके मन में वो सवाल था और इस सवाल की जो जिज्ञासा है, सवाल पूछने का जो आपका मादा है, इसको जगाए रखिए ताकि आप भविष्य में अच्छे पत्रकार बन सकें। इसके अलावा जो है मैं हमारे साथी जो कैमरा पर्सन हैं रमेश जी और मेवालाल जी, और जो साथी हैं हमारे अमरीश जी, इन सब का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि उन लोगों ने इस काम को सफल बनाया। धन्यवाद बहुत बहुत। अब आप अपनी क्लास में जा सकते हैं। थैंक यू।